A very good afternoon to the respected dignitaries, professors, and all the students. Guiding us through the art of setting smart goals rooted in Ayurvedic vision, we feel privileged to introduce a distinguished scholar and visionary in the field of Ayurveda, Dr. Satya N. Dornala sir. He holds degrees of BAMS, MD in Ayurveda, and PhD in Ayurveda, along with multiple postgraduate certifications from reputed institutions like IGNU, ICMR, and Stanford University. Sir presently serves as the medical superintendent of Swami Vivekanand Ayurvedic Panchkarma Hospital, Delhi, and also as officer in charge of pharmacy and stores. His remarkable journey is adorned with numerous accolades, including the Dhanvantri Purashkar, Pranacharya Award, and the International Aryabhat Award, recognizing his excellence in Ayurvedic practice, research, and global contribution. Author of 5 books and over 50 scientific publications, he is also an eminent orator and a dynamic thinker devoted to the advancement of Ayurveda. With great pleasure, let's warmly invite Dr. Satya and Dornala sir to deliver his much awaited online guest lecture. Welcome you, sir. Yeah, good morning, you all. Hope good afternoon, you all. At the outset, let me thank the organizers, principal and the faculty members for inviting me to speak on the topic Integrative Tradition with Ambition, Goal Setting in Ayurveda Education. So, thank you. And I welcome all, young generation who are the torch bearers of this ancient knowledge. Why? Because, the purpose of every science is to serve the society. Similarly, Ayurveda is also science. The purpose of Ayurveda is also to serve the society. But the science as such, it never goes to serve the society. And the people like us, we take this, this knowledge. We take this knowledge as a medium to serve the society. So, and here in this context, institutions are the connecting links between the institutions, are the connecting links between the science and society, where this knowledge is being imparted to the people like us, so that we take this knowledge and go to the society and serve the society. So remember, you all, young generation, and you people are particularly the people of this tech generation, where the lifespan of the knowledge you see as an it's span of seconds. Even iPhone, every year it comes a new version. Every day the things are being updated, the apps are being updated. That's how the knowledge, the lifespan of the knowledge is very, 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 in a span of second. So you people who belong to that generation, and you have the responsibility of carrying this knowledge, ancient knowledge, the great science, and you have been given this responsibility to carry this knowledge to the society. And you people must have heard, and maybe you will heard these kind of words. Ayurveda logo mein society mein itna nahi hai, तो इतना वो नहीं. This is all who will be the held responsible for these kind of comments and these kind of the perception in the society. Again, it is the people who have the responsibility to carry this knowledge to the society. So that's how this present curriculum, once you have taken the admission into this course, and you will be given the knowledge based on a structured curriculum, and that curriculum recently, maybe I hope it is in 3 years back, it is being introduced,
and that particular curriculum is based on a mode of integrative aspect. So you will be given the contemporarily you will given the knowledge of Ayurveda, and parallelly in the similar lines you will given with the knowledge of the modern science also. So that's how the science, every science should not be in a silos. Every science should not be silos. So remember, so we particularly the people of this generation naturally who adapt the fashion in a day-to-day, ever-changing fashion. So the science also thinks there are aspects they are being changed, being influenced by the technology and being influenced by the health-seeking behavior of the people. So accordingly, we ourselves, our science also to be modified as per the need and necessity of the society without deviating from the fundamentals. So that is very important. Hope you remember, when I took admission for my graduation. Remember in the year 1995. So all these years, so much of things have changed. When I took the admission in 1995, whenever we want to make a call, we were supposed to stand in line, and we used to take in 1 rupee coin, and we were supposed to stand in line. Almost our turn will comes after 30 minutes, and that coin will work for only 3 minutes. And other the people are standing behind us. They never allow to speak beyond the 3 minutes. So that's how those kind of situations we have seen all these almost these 20-25 years. The things have changed and technology has changed the momentum and the pace of the growth. So that's how so the your thought process is also to be imbibed into in a day-to-day education, particularly with respect to Ayurveda. And that you have been from day onwards, maybe probably 3 days 4 days back, you have been inducted into this program, and you've been imparted this responsibility to carry this knowledge. Coming to the current topic, that is integrated tradition with ambition. The moment I say ambition, you people must have had the ambition of becoming doctors. So that's how most of you have achieved the ambition. Maybe not fully, because everybody will opt for the MBBS as a first choice, and otherwise you been entering into the BMS. So that's how. But don't think that आप अपने आप को ये ना समझे, यार मैं MBBS सोचा BMS में आ गया, ठीक है। कुछ लोग कहते भी है कभी कभी किसी मंदिरों में दर्शन जाना है, तो कभी काशी जाना है, बनारस जाना है, तो यार भगवान से अभी जब भी काल आएंगे तब तो पक्का जाएंगे। ऐसे इट्स नॉट दैट गेटिंग एन एडमिशन इन आयुर्वेदा इज नॉट इट्स नॉट समथिंग MBBS नहीं आया इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। तो when I took the admission in in 95 into BMS, so usually everybody's perception will be the same. But as after passing all these years, so मुझे अपने आप को मैं when I introspect myself, लगता है यार if at all इसी टाइम में MBBS में होते तो मेरा क्या हाल होता था, अभी मैं इस टाइम आयुर्वेद में हूँ क्या है। So definitely you will feel the change, provided you will put up sincere efforts in your day-to-day education. So that is very important. That is very important. What I want to convey you is, so Ayurveda is na कहीं भी किसी एस्पेक्ट में मॉडर्न मेडिसिन से कम नहीं है। मे बी द अप्रोच इज डिफरेंट, मे बी उस हॉस्पिटल में मे बी वहां भीड़ ज्यादा देख सकते हो, दैट्स ट्रू। बट द पॉइंट इज डोंट ट्राई टू पुट अप द आयुर्वेदा इटसेल्फ इज इन अ सुपर स्पेशलिटी। आप समझ लो, एलोपैथी में भी देखेंगे एक आरएमपी के पास कितने ओपीडी होती है, एमबीबीएस डॉक्टर के पास कितने एमपीडी ओपीडी होती है, एमडी डॉक्टर के पास कितने ओपीडी होती है, डीएम के पास कितने ओपीडी होती है। समझ गया बात? एक आरएमपी के पास हो सकते हैं 200 का ओपीडी हो, एक एमबीबीएस के पास 100 ओपीडी हो, एक एमडी के पास 10 ओपीडी हो, एक डीएम के पास 2 ओपीडी 4 ओपीडी 5 ओपीडी। So it's not that everything you try to see the Ayurveda into through the lens of modern science. It's not true. So every science has its own strengths and limitations. So being you people are this generation and tech era generation, you should accept everything, whatever the best you take from all the different sciences, and for the betterment of the science in turn, but the betterment of the patient care and the society ultimate goal.
That's how the ambition. While formulating, as I'm saying, this new curriculum, the curriculum they beautifully named it as a competency-based dynamic curriculum. So you people are going to be taught based on that curriculum, competency-based dynamic curriculum. So how it is different from the previous curriculum, if you look at that. So previous curriculum, maybe 3 years back, there was a curriculum. It was taught for almost 2-3 decades. That was more of teacher centric, and the current curriculum is of more of student centric. अभी पहले पहले जो में उसमें टीचर बड़े ठीक था, मतलब अपने कंफर्टेबल जोन में थे. अभी बस टीचर अभी इस करंट टीचर सेंट्रिक में स्टूडेंट सेंट्रिक में ये आ गए, टीचर के ऊपर बड़े लोड आ गए. स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर भी लोड है, बट व्हेन कंपेयर्ड टू द टीचर स्टूडेंट्स आर कंपैरेटिवली इन अ कंफर्ट जोन. So that's how it is. The curriculum is designed in a more of teacher-centric mode. So this particular CB is competency-based dynamic curriculum. Dynamism in a sense, it's not static one. Dynamism in a sense, anything if you find in a word dynamic, it keep on changing with the pace of the time. So for example, अभी 2-3 साल के बाद कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, they made in a such a way that our technology it will become the part of your curriculum. So that's how it is more of a competency-based dynamic curriculum. So it's not a static one. And this particular competent dynamic curriculum is to inbuilt of the integrative part, and that's how their goal was to make an integrative tradition as a part of Ayurveda education. We'll see one by one. Next slide, please. So you could see the introductory side. Is it so? आप सारे इंट्रोडक्टरी स्लाइड देख रहे हैं ना? हेलो हेलो. Yes, sir, you are audible. Just a second. इंट्रोडक्टरी स्लाइड आ रही है? Yes, sir, it's visible. Yeah, go to the next slide, please. Yeah. So coming to the introduction part, if you could see, जहां जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, that is integration. Integration, the tradition of integration, ये भारत का हर खन खन में है. भारत का आत्मा ही इंटीग्रेटिव ट्रेडिशन. व्हाई? बिकॉज अब इतने आप देख लीजिए, मल्टीपल फेथ्स एंड मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टी क्यूसाइंस, इतनी आप हर बिहार में जाओ या अलग तरह का खाना, राजस्थान में जाओ, हरियाणा में जाओ, आंध्रा में जाओ, तमिलनाडु. So every state, every राज्य में अपने अपने अलग अलग cuisines है, and multiple costumes and customs, multiple caste and creed and color, and ultimately the multiple healthcare systems. That is आयुष systems भी कम से कम 7 है, एलोपैथी के साथ भी है. तो India is only the country in the whole world who have multiple healthcare system. For example, allopathy, Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, सिद्धा, सौरिक, होम्योपैथी, इस तरह का इतने रिकॉग्नाइज्ड मल्टीपल हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में कोई कंट्री में नहीं है. एंड दिस पर्टिकुलर द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल हीलिंग सिस्टम इज नोन एज मेडिकल प्लूरलिज्म. So मेरा कहने की है, this integrity, that integrative approach and integrity is not only in the medical system, it is there in हर भारत का हर जीवन विधान में ये integrative tradition है. So the reason we call it as in India is Bharat is known for unity and diversity. Though we have this much of multiplicity in many things, many aspects, still we maintain as a single unit. That is what the integrative tradition. Yeah, next slide, please. So before going to, as I said, there is a medical pluralism, that is coexistence of multiple healthcare system in addition to the major system, that is allopathy, and in that the Ayurveda comes in first, and we mainly focused on Ayurveda. So I call it as you people must have heard other perceptions, other dimensions of Ayurveda from the maybe all these 3-4 1 week. So, but my perception is, आप लोग जितने भी आपने छोटे से भी जो भी इंस्ट्रूमेंट भी खरीदते हो, एक छोटे सी डिजिटल पेन भी हो, डिजिटल वॉच भी हो, एक कोई मतलब एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक भी, इलेक्ट्रिकल जो भी आइटम आज के डेट में हम खरीदते, इररेस्पेक्टिव एनीथिंग, यू विल गेट एक छोटी सी किताब मिलती है उसमें, that is called as
मैनुअल बोलते हैं। उस मैनुअल में ये लिखा रहता है इसको ऑन कैसे करना, चार्जिंग कैसे करना, तो इसको आगे कैसे चलाना, ये पता कोई दिक्कत हो तो क्या दिक्कत आ सकती है, दिक्कत हो तो कैसे आपको रिजॉल्व करना। सो दैट इज द मैनुअल। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आयुर्वेदा इज इन ए मैनुअल ऑफ लाइफ, यूजर मैनुअल उसे बोलते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आते हैं यूजर मैनुअल। आई कॉल इट एज दिस आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ आयुर्वेदा इज यूजर मैनुअल ऑफ लाइफ, because he teaches you how to operate and how to maintain. That is user manual, that is operation and maintenance of life. Operation and maintenance manual of life is Ayurvedic science. So remember, हर चीज जो भी चीज, जैसा एक छोटी सी मशीन खरीदने से उसकी एक मैनुअल आती है, यूजर मैनुअल आती है, डोंट यू थिंक दैट human life is, multi-million trillion times more powerful than a simple submission? Don't you think you need any user manual for this life? Of course. So Ayurvedic science is in a operation and maintenance manual of life. And Ayurveda is, it is healing gift to the world. And integration, you see, the moment when this yoga is being declared as an international yoga day on every year June 21st, since then Ayurveda and yoga is moving in hand. So gradually Ayurveda is becoming, being integrative as a yoga. Now it is gradually being, pronounced as Ayur yoga. So both are moving hand in hand. That's how it's becoming an integrative aspect. Yoga is becoming integrative aspect of Ayurveda. So moving further, so the next question comes as we are discussing more about the Ayurveda. So naturally we are more, being popularized by the modern medicine or biomedicine, allopathy. So question comes how it differs from biomedicine, how it differs from allopathy. So the definition of allopathy, if you see, so it is being defined as science and art of healing, whereas Ayurveda is science of well-being and art of natural or self-healing. In other words, it is inner healing. Point is, Ayurveda believes in that body has its own self-healing capacity. We should create such a medium that will allow the body to heal on its own. The reason people say Ayurvedic के दवाई खाने से जड़ से बीमारी जाती है. Why? Because body it heals on its own, and we create such a move, environment so that the natural body healing should not be gets hampered. So that's how it is teaches always science of well-being. It is multi-dimensional. Health is, simple. It is the moment you call it as a health, it is in an individual perspective. Whereas if you call it as a well-being, it is multi-perspective and societal perspective, environmental perspective also is a part of your well-being. So that is very important. So for example, pollution ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं आप बीमार हो रहे हो. तो वेलबींग एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी है. सो दैट इज, सो द रीजन आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ वेलबींग, इट्स आर्ट ऑफ नेचुरल सेल्फ हीलिंग. So it is broad in dimension when compared to allopathy. Next, please. If you look at this slide, that is 4,000 years of medicine. TM to ATM, that is TM means traditional medicine, ATM means alternative medicine. What exactly the difference between traditional medicine and alternative medicine? Traditional medicine means anything which is the part of the people's tradition. Every country, more or less, they have their own tradition. But Ayurveda is also being considered as the traditional medicine, but which is rather than the more than the traditional medicine which is being defined. Because the most of the traditional medicine, almost if you go to any tribal area of the country, every tribal area of country, they have their own unique practices. That is also part of the traditional folklore practices, but they are not truly, based on a particular science, in a particular fundamentals. Whereas Ayurveda is in a codified system of healthcare. It is based on a, sustainable, strongest foundational principles.
And alternative medicine is when people started looking at the traditional from medicine from the perspective of the modern science, modern medicine. So it is alternate. It has become alternative medicine. It is alternative to the modern medicine. Wherever the modern medicine fails, wherever modern medicine could not succeed further, where the people started looking at the traditional medicine, now they have started opting that as a secondary choice or an alternative choice. So, if you look at the word alternative, native means it is native to this particular alter means altered. That is altered to the current context. So that's how it is alternative medicine. If you go through all these 4,000 years, so almost in a 2001 BC, that time it was purely, people used to say eat this root for any illness. So that's how after 1,000 years it stated no 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 ये रूट का काम नहीं कर रही है जड़ी बूटी से काम नहीं चल रही ये आप ये मंत्र पढ़ो फिर उसके बाद ये होगा नहीं 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 मंत्र नहीं ये थोड़ा सा ये हम कुछ ये पीने का दवाई बनाए ये पियो फिर उसके बाद नहीं नहीं ये पॉइजन कर लो फिर उसके बाद 1945 में दिस इन इफेक्टिव ये फिर 1940 19 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ये एंटीबायोटिक आया हुआ पेनिसिलिन वहां से बड़े मेडिसिनल रेवोल्यूशन शुरू हो गए फिर उसके बाद पेनिसिलिन भी रेसिस्टेंट हो गए फिर टेट्रासाइक्लिन आ गया उसके बाद फिर और एंटीबायोटिक आया फिर आप लगभग ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल नया कुछ मिल ही नहीं रहे हैं फिर अगेन नाउ द पीपल लुकिंग एट phytopharmaceutical now they have started where we have started in 2001 BC that healed this road now again in 2000 AD also almost 4,000 years travel time so again it's come to the root so the point is no science is perfect in its entirety so every science should be complemented with the other sciences so that the society can be benefited in the larger context. That is very important. कोई भी समझ लो मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ ये ना सोचे मेरे मन में आयुर्वेद में सब कुछ है यार यूनानी में कुछ नहीं है सिद्धा में कुछ नहीं है एलोपैथी में कुछ नहीं ये गलत being in a true scientist, true science student of this generation, yes, you must be having a love towards your science, but that doesn't mean that you should have a blind faith towards your science. Fine. So that is very important. So moving further, coming to the Viksit Bharat. So now our Bharat is gearing towards further that the vision to achieve developed Bharat by 2047. By the time India is completing 100 years of independence. सो तब तक हमारा देश को विकसित भारत देखना चाहिए दिस आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर given the target to entire the population of our country great country so before that just I want to draw your attention to that hope you people must have heard that in the good olden days back so India Bharat used to be considered as a Vishwa Guru आपने सुना भी होगा कहीं पढ़ा भी होगा तो उसी टाइम जब नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी जब थे तो सो दे वर द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द होल वर्ल्ड तो उस टाइम हम यूज भारत को विश्व गुरु कहते थे तो जब मैंने सोचा लगा यार ऐसे भारत के पास क्या थे तो पूरा देश विश्व में भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा है सो दैट इज हमारे पास कोई हथियार नहीं थे कि हम किसी के ऊपर लड़ने नहीं जाते थे अंटिल अनलेस हम अपनी 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 मतलब से रखते तो कोई हमें लड़ने आएंगे फिर हम उसके ऊपर उसके प्रति हम वो करते थे बट हमारे पास ऐसा है क्या थे सो दैट इज आई केस दैट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भारतीय ज्ञान परंपरा सो दैट एक्चुअली स्टूड भारत एज विश्व गुरु but in these so after the foreign invaders came into our Bharat and this glory of this position we lost this position of Vishwaguru but in the recent past 10 in a decade almost 10 to 15 years previously 10 to 15 years we started regaining the Vishwaguru position for example Bharat, we proposed to declare International Yoga Day, and it is being accepted unconditionally by all the countries of the world. That is June 21st as an International Yoga Day. And thereafter also, previously,
So there also, after all, even were proposed, World Meditation Day on the December 21st. That is also being accepted in most of the countries. And people are looking for India. People are even during the COVID also. So Bharat has supplied vaccines to almost 40 to 50 countries. So now people are looking. The entire whole world is looking for India for So in many aspects, not only in the tradition, not only even in the technology also, India now started exporting the UPI technology to the many countries. So-called developed countries also receiving our UPI technology. So that's how Viksit Bharat 2047 is a vision. It's not that our honorable Prime Minister given a mandate that it should be the in every individual thought process that my country should be in a Viksit Bharat by 2047. I myself I'll put my sincere efforts to achieve this goal. आप जब बार एक हम गोल लेके चल रहा है तो इसका मतलब ये तो भारत अपने आप थोड़ी 2047 में विकसित हो जाएंगे हर इंसान who will be the responsible citizen of this country take this sankalp and put his or her best efforts to achieve this goal then the larger sankalp will make an easy for all of us to achieve this target. And when come to the India, so previous slide please. So when come to the India, so Viksit Bharat 2047 demands a knowledge-based economy driven by research and innovation. The goal is to establish Ayurveda as an evidence-based global healthcare system. And if you look at this, the slide which you could see, five pledges for the next 25, 2 years back, when our Honorable Prime Minister delivered a speech from the ramparts of the Red Fort on Independence Day, and he given the one, there are Pancha Pran, there are five, and the third Pran was take pride in our heritage and legacy like yoga and Ayurveda. So that's how the government of India is giving the full emphasis, full focus on Ayurveda, and I'm sure that one day will come, people of the other countries will look for the Ayurvedic doctors from our country. So that dream is not much far. Next, please. Next slide, please. Yeah, as I said, our talk started as an integrative education, integrative tradition as an ambition. Actually, this integrative is borrowed from a national education policy of Government of India 2020, where national education policy has mandated under the heading of this professional education, it is been highlighted, given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative. Meaning, thereby all the students of allopathic medical education must have a basic understanding of eye systems and vice versa. So this is a mandate where from our NCS have taken a cues from this, and even in the modern science also they have also made in a way that so both the sciences, the people any though I'm an eyes doctor, other person is an allopathy doctor, but the target of our both of his common goal is to treat the patient and to make the society better and Swasthya Bharat and in turn Samruddha Bharat. हम दोनों का काम एक ही है तो रोगी को मरीज को हम if the limited resources, limited expenses should make the patient better and we should work on the more of preventive aspect. So जब दोनों के गोल एक है हम दोनों अपने दूसरे के बारे में ना जाने तो everybody is working in a different direction and maybe at times there is a duplicacy of the same work. So that's how Nation Education Policy 2020 mandated that the education system must be integrated. So based on that, our curriculum that is competency based डायनामिक करिकुलम हमें जब पढ़ते वक्त हमें लगता है हमारे कई चीज एलोपैथी का पढ़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं है ये एलोपैथी आयुर्वेदा ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी की नीड है
वो हमको सोसाइटी के नीड का जो बेसिक नीड्स होती है। अब एक चीज मान लीजिए, ऑलमोस्ट आज के डेट में हर स्टूडेंट के पास, हर चीज के पास लैपटॉप होती है। किस लिए भाई? अब थोड़ी कंप्यूटर इंजीनियर, आपके पास लैपटॉप किस लिए? So that has become an, the mobile has become earlier days, जब आप पढ़ते थे, cell is the structural and functional unit of life. But the cell, हमारा mobile, the cell or the mobile has become a structural and functional unit of your lifestyle. सो जब वो टेक्नोलॉजी आप साथ साथ लेके जा रहे हैं, जो सोसाइटी में जो ट्रेंडिंग है, तो अकॉर्डिंगली जो चीज होती है उसको भी सीखना जरूरी होती है। इट्स नॉट दैट डोंट मेक एनी बाउंड्रीज फॉर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट प्लीज। Coming to the noble ambition, what I want to say is, as you started to talk on ambition, that is integrative ambition. Yes, the integrative tradition actually leads to the new things. For example, नोबेल एम्बिशन में आप जितने भी नोबेल लॉरिएट्स को देखो, आप कभी पढ़ लेना उनकी एजुकेशन के बारे में। कभी वो बेसिकली वो फिजिस्ट होता है, फिर बाद में पता नहीं केमिस्ट्री पढ़ता है, फिर बाद में बायो केमिस्ट्री पढ़ता है, फिर बायोलॉजी पढ़ता है, पता नहीं उनको मिलता है। जो फिजिस्ट होते हैं उनको मिल जाएगा फिर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये कौन सी बात है हुई? That means this particular नोबेल साइंटिस्ट, उनकी सोच विचार, जो नोबेल एम्बिशन जो है, तो उनकी सोच विचार, until unless we are not being exposed to the multiple sciences, आपके सोच में बदलाव नहीं आएगा। बिकॉज व्हेन यू बीन एक्सपोज, फॉर एग्जाम्पल हम हैं, जब हम एलोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, हमारा सोच कहीं ना कहीं हमारे डाटाबेस में आयुर्वेद प्राइमरी नॉलेज है, हमारा सोच कहीं ना कहीं जो भी पढ़ते रहो, हमें आयुर्वेद में हमें पता ही नहीं चलता, हम आयुर्वेद की भाषा में समझने लगता है। इफ एट ऑल एलोपैथी डॉक्टर जो होता है आयुर्वेदिक पढ़ेगा, वो भी अपनी भाषा में समझने लगता है आयुर्वेद को। So until unless you students, younger generation not been exposed, not only you, everybody not been exposed to multiple sciences, कोई नया चीज नहीं आती है। As you are being exposed to the multiple sciences, that leads to cross pollination of ideas. That leads to cross pollination of ideas. That means exchange and blending of diverse thoughts, perspectives, knowledge, or practices from different fields and disciplines or groups to generate novel solutions and innovations. इसीलिए तो नोबेल प्राइज आते हैं ना लोगों को। कैसे? सिंपल, फॉर एग्जाम्पल आई गिव इन एग्जाम्पल्स। 2015 में यू फ्रॉम चाइना, शी रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आप जानते हो इसकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है? शी डिड फार्माकोलॉजी, just graduate in pharmacology. अभी तक शी इज ओनली द फर्स्ट लेडी इन द नोबेल हिस्ट्री में सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट थे। शी डिड फार्माकोलॉजी, दैट इज बीएससी फार्माकोलॉजी किया हुआ इसने चाइना में। एंड उसके बाद दो तीन साल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीख लिया। फिर शी वर्कड ऑन आर्टेमिसिया एनुआ, so it's proved as an anti-malarial drug, herbal anti-malarial drug, and it saved thousands of lives globally. So she received 2015. So it's not that when you restrict yourself to your own science, आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा। If you want anything new, novel, innovation, so you need to learn other allied sciences. That is very important. It's not that आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ रहे हो इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन पढ़, no, it's not so. Anything which is allied, I'll tell you, we'll move forward. In 2016, a person from Japan, Yoshinori Osumi, he received 2016 Nobel Prize in Physiology and Medicine. आपको ये नहीं पता, he is actually a chemist. He is actually a chemist. उसके बाद और कुछ नॉलेज he gained, other qualifications in medicine, other qualifications in physics, other qualifications. Ultimately, he established, autophagy. He received this Nobel Prize for discovery of mechanism autophagy. What is this autophagy? That is in Ayurveda we call it as a langanam paramoshadam. So kainekam kainekali, it is an Ayurveda inspired. How langanam paramoshadam? How this langanam has become paramoshadam? Because based on the autophagy mechanism.
is a chemist but received the Nobel Prize in medicine. Remember, so that means what I want to emphasize is learning allied sciences gives in a novel thought. अब ये 2017 ये देखो. Next slide please. Next slide. Next. Next slide please. Next. हाँ ये नहीं नहीं हाँ ये 2017 का 15 का हो गया 16 का 17 का ये है. These trio received a Nobel Prize in Physiology or Medicine, but nobody is from the medicinal background. But somehow they have studied different sciences. तो जितना भी आप नोबेल लॉरेट्स का जो उसकी लाइफ प्रोफाइल पढ़ो, उनकी एजुकेशन पढ़ो, कोई भी ऐसा नोबेल लॉरेट नहीं मिलेगा आपको. सिर्फ जो शुरू आप समझ लो हम आयुर्वेद पढ़ लिए, आयुर्वेद में रह गए जिंदगी भर. तो हम यू आर नेवर अटेम्प्टेड टू स्टडी अदर साइंसेस टू गेन द नॉलेज फ्रॉम अदर साइंसेस. तब तक आपके सोच में बदलाव नहीं आएगा. बिकॉज दीज आर द लाइव एग्जाम्पल्स. The allied sciences gives a new thought process that gives a novelty in your execution of the work that leads to innovation. And they 2017 they found in a chronobiology and circadian rhythm. They are absolutely simulates with Ayurvedic concepts of dinacharya and rutucharya. There, for the mechanism, how these chronobiological and rhythms are being modulated. Yeah. So next slide, please. Yeah, coming to the word integration, as we started with the word integration. So all this background, how integration is, part and the parcel of Ayurveda. What exactly otherwise the word integration actually defines and depicts. The word, it adds, many origin, Latin origin, as a verb, it gives some meaning. As adjective, it gives some meaning. If you look at this Latin verb tangere, to touch and to handle, adjective integer, even mathematics, maybe we heard that is integer word we use for the whole number, untouched, and Latin verb integrate, to make whole, to restore, to begin again. And Latin noun integratio, that is renewal and restoration. Integration has a multi-dimensions. This is safe. So ultimately, overall, what exactly integration means, to put together parts or the elements and combine them into whole. That is whole person care and holistic focus through integration of technology and different treatment approaches. I given a different dimension of integration based on these root word meanings. Next slide, please. Yeah. Look at the word integration, that is disintegration, integration, syntegration. These are three different terms, though you may not find few terms in Google. Because in the previous slide, the one meaning is, if you go through previous, one meaning was renewal and restoration. Renewal and restoration. Many, practices in Ayurveda are obsolete as on date. मतलब आज के डेट में वो प्रैक्टिस में नहीं है. हम भूल गए. क्यों? किसी ने किसी को सिखाया ही नहीं. हम भूल गए. कहीं दवाई भी है तो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड की दबाव में आके वो हम इंडिया में भी यूज करना बंद कर दिया. अब कई जगह ये मेर्क्यूरी भी बंद करना हमारे ऊपर प्रेशर आ रही है. But disintegration means there are few practices, there are few medicines. For example, नाड़ी परीक्षा उस टाइम बड़े पॉपुलर थे, आज के डेट में इतना पॉपुलर नहीं है. Because that art is actually an experiential art. Until unless you don't feel, you don't practice, it never carry forward to further generations. So many such practices, many such medicines, many such herbs, they are disintegrated from our day-to-day practice. Now it is a time to restore them and to integrate to the current era. That is also integration. And remember, there is a text by name Kashyapa Samhita. There is a text by name Kashyapa Samhita in Ayurveda, which mainly
deals with the Ayurvedic pediatrics. बट आज की डेट में किताब सिर्फ 40% ही है, सारे 60% गायब है. बट ये किताब कैसे रिस्टोर हो सकता है? यस, इट्स नॉट वेरी फार. Considering our AIML technology, artificial intelligence, machine learning technology, it's not very far. Definitely, we can restore those texts completely. So this is also an integration. That is, restoring the last portion is also integration. That is, disintegrated knowledge has to be restored and renewed and to be integrated into your current practice. That is disintegration. And integration means whatever the available knowledges are there as on date. So those things has to be, to make the part of our, day-to-day practice. Remember, always anything which you do, ease of doing, ease of practice is ultimate. Ease of doing, ease of practice is ultimate. So that has to be explored. For example, कोई चीज हम लेने से, एड लेने से हमें इजी हो जाएंगे, क्या नुकसान है? अब हम लोग पहले पुराना, जब 50-70 साल पहले में एक ट्रेन चढ़ गए तो 4 दिन लगते थे. आज की डेट में ऐसे ऐसे गाड़ियां हैं, ट्रेन आया हुआ है, मतलब 12 घंटे में पहुंच रहे. तो दैट इज स्पीड. Not only ease of doing, again other aspect is now speed of doing is also important. Ease of doing, speed of doing, that is both are the important, so that all available knowledges and the technologies we can make a part of your the science. Respective, maybe हम आयुर्वेद वाले हम आयुर्वेद करेंगे, होम्योपैथी वाले वो अपने हिसाब से कर लेगा, यूनानी वाला वो अपने हिसाब से कर लेगा, एग्रीकल्चर वाला वो अपने हिसाब से कर लेगा. So that is ultimately the purpose of every science is to serve the society by taking the aid of all available knowledges. Coming to the syntegration. Syntegration means synthesis of knowledge. That is unifying the knowledges. हर चीज कहीं ऐसी नॉलेज है, जब हम दूसरे साइंस पढ़ लेंगे, हम वो काम दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती unnecessarily, so that we can save the duplicacy of the work, human effort, and the human resource and financial resource can also be saved. That is integration. So there are different dimensions of integration. Doesn't mean that allopathy ka le lo wo integrate hoga. No. So even integration of technology is also important. So now धीरे धीरे अब integration भी, the word integration is also becoming gradually losing its importance. Now the world is moving to the convergence. Now the world is moving to the convergence, that is convergence of technology. क्यों? आज के डेट में सारे जितने भी फील्ड है, सारे एक ही चीज को पकड़ के पीछे चल रहा है, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज AIML, जो भी होगा. जब सबके टारगेट एक ही हो, तो हम भी उस टारगेट पे पहुंच जाओ भाई. कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कुछ जैसा वो सिचुएशन आएगा, एवरी साइंस विल बी एट एन इक्वल प्लेटफॉर्म. So that's how we are moving beyond the integration towards the convergence of technology. So other dimension of integration is horizontal and vertical integration. Horizontal and vertical integration means, I'll tell you one thing. Simple. There are the horizontal integration where there are different sciences. Vertical integration, there are different sciences. There, for example, Ayurveda bhi hai, biochemistry bhi hai, many Ayurveda, biochemistry, pathology, and there are different fields. Ayurveda, allopathy, homeopathy, Unani, and agriculture, there are different. They are all one by one placed. That is vertically they are placed. There are different sciences. Different sciences are called as vertical integration. Other one is horizontal integration. फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद के अंदर भी कहीं फील्ड साइंसेस है, रस शास्त्र भी है, द्रव्य गुण भी है, निदान भी है. तो ये अपने बीच में भी बात भी कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. That is, interdisciplinary integration is horizontal integration, and interdisciplinary integration means that is vertical integration. Any integration starts with a dialogue. आप उनसे बात करना शुरू करोगे, that is the first step.
So that is should be in the common interest. And integration never at the cost of the integrity of the individual science. Remember, integration never should be at the cost of integrity or of the individual science. समझ लो, आयुर्वेदा और एलोपैथी हमने कर लिया, तो डाउन द लेन 10 साल के बाद लोग आयुर्वेद को भूल ही गए, मतलब आयुर्वेद में कुछ नहीं भी है, जो भी है ये सारे एलोपैथी है. सो आयुर्वेद का इंटीग्रिटी खत्म हो गया. सो इट शुड नॉट बी सो. It should not be so. So coming to there is a spiral integration. The spiral integration also known as spiral curriculum. That means his curriculum में आयुर्वेद में part and parcel है. Very beautiful it is. It is an educational method where fundamental concepts are revisited repeatedly throughout a course. That means कई चीज आयुर्वेद में है, डे 1 में आप पढ़ोगे, लास्ट पीजी में भी लगता है, आपको लगता है यार, मैं खुद को लगता है यार जी पूरा साल जो 10 साल पढ़े यार यही वात कब यही वात पढ़ा, इसका अलावा कुछ है ही नहीं पढ़ा. That is spiral integration. And remember, it's an educational method where fundamental concepts are revisited repeatedly throughout a course or academic program, each time at a deeper level of complexity and new context. ये लास्ट वाला तो नहीं हो पाता है, वो अलग बात है, बट एक्चुअली ट्रू सेंस वही है. वही वातपित्त का डे फर्स्ट ईयर में शुरू करेंगे, आपको पीजी पीएचडी में जाओ, वही वातपित्त का घूम के बात वहीं आकर रुकती है. बट इज इट एट द डीपर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड न्यू कॉन्टेक्स्ट? वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है, बट अदरवाइज ट्रूली दैट हैज टू बी देयर. एंड देयर इज एन हार्डेंस लैडर ऑफ इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर मेडिकल एजुकेशन में एक लैडर ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. दैट मींस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशन. समझ लो आज के डेट में पटाल आप कह रहे हो दिनचर्या आपने पढ़ा लिया, फैकल्टी मेंबर्स बैठे, दिनचर्या आपने पढ़ा ली, आप कह रहे हैं यार सांस लेने में आपको तो प्राणवात हेल्प करता है, सुसु जाने में आपको अपानवात हेल्प करता है. ऐसे कैन यू आस्क अ स्टूडेंट, यू पुट इट ऑन पेपर, सुबह से शाम तक क्या क्या आपने एक्टिविटी किया, उसमें कौन सा दोष है, कौन सा आपका त्रिस्तून जो वातपित्त कफ में क्या आपको उसको वजह से वो आप कार्य कर पाया. सो दैट इज रियल लाइफ सिचुएशन. तो वट एवर यू लर्न एंड यू लिंक अप दैट विद योर रियल लाइफ सिचुएशन. एंड पहले जब व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, हमें तो पेशेंट को सुनने, पेशेंट के बारे में सुनना, पेशेंट को टच करना, वो तो हमें बस सेकंड डे पता नहीं, सेकंड ईयर में निदान बैच में 1.5 2 साल के बाद आते थे, तो उस टाइम कभी हो सकते 3 साल के बाद भी आता. बट द करंट सिनेरियो दैट इज वेरी फर्स्ट डे you should be exposed to the real life situation, that is early clinical exposure. That is very important. Next please. Why integration in Ayurveda? Because जैसा मैंने बोल रहा था, मल्टीप्लिसिटी, प्लूरलिज्म इज भारत का हर कन कन में है. सिमिलरली आयुर्वेद में भी है भाई. आयुर्वेद इज कॉल्ड एज अ साइंस ऑफ साइंसेस. व्हाई? बिकॉज यार ऐसे आप पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा यार ये तो सारे साइंसेस हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं यार, इसके तो बढ़िया तो एलोपैथी में. कुछ नहीं करना है उसको, अपने एक पढ़ना है. हम तो यहाँ आयुर्वेद भी पढ़ो, एलोपैथी भी पढ़ो, उसके साथ साथ नॉट ओनली दिस हेल्थ साइंस, कभी बायोलॉजी पढ़ो, कभी फिजिक्स पढ़ो, कभी केमिस्ट्री पढ़ो, कभी बॉटनी पढ़ो, कभी जूलॉजी. यार क्या समझ रहे यार, हमें क्या बनाना चाह रहे हैं भाई? बिकॉज आयुर्वेद इज सच एन साइंस, इट इज साइंस ऑफ साइंसेस, इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आएगा. यू विल फाइंड एस्ट्रोनॉमी इन आयुर्वेदा, यू विल फाइंड कॉस्मोलॉजी, यू विल फाइंड फिजिक्स, यू विल फाइंड बायोलॉजी, यू विल फाइंड केमिस्ट्री, you will find metallurgy, you will find botany, zoology, phytochemistry, pharmacology, marine biology, physiology, psychology, sociology, math, stats, agriculture, environmental science, earth science, fisheries, spirituality. ऐसा कोई साइंस ही नहीं है वो आयुर्वेद में आपको उसकी प्रस्ताव मिलेगा. आयुर्वेद को जो बोला गया वो समझना है तो उस साइंस का कुछ फंडामेंटल बेसिक तो समझने पड़ेगा, तब भी ये समझ में आएगा. अब समझाओ, अब बताओ. तो इंटीग्रेशन आयुर्वेद इसलिए वो ऑलरेडी आयुर्वेद में है ही है, उसकी प्रस्ताव है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक एनी प्लांट, नीम का पत्ते देखते हैं, हम कहने के लिए नीम का पत्ते कहेंगे, बट उसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, वो समझना है तो उसको आप बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी में कुछ चीज समझना पड़ेगा. सो दिस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. आप कहीं एनिमल सोर्सेज भी हम आयुर्वेदिक दवाई में है, आप कुछ मेटल्स भी हमारा आयुर्वेद दवा, सो दैट आप मेटलर्जी पढ़ोगे और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ोगे.
तो ये ऐसे नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद में सच में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं साइंसेस का कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक ओवरव्यू होना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। एज सच आयुर्वेद एज सच करके इस जनरेशन में आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब विल सी, या अब बस हो गया लास्ट 2-3 स्लाइड्स। आई गिव वन एग्जांपल आयुर्वेद एंड एग्रीकल्चर। जैसे में होता है इंटीग्रेशन विल गिव यू न्यू डायमेंशन, न्यू थॉट प्रोसेस दैट लीड्स टू इनोवेशन। आयुर्वेद में मेजर चीज है मेडिसिनल प्लांट्स ही ज्यादा होती है, उससे दवाई बनती है, उससे यूज कर सकते हैं। अब मान लो इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेस्ट में अब घुसने नहीं देते, ये मेडिसिनल प्लांट्स आ कहां रहा है, कहां से आ रहे हैं, कहां से बनेगा, गिलोय कहां से आएगी, सिंपल से तुलसी कहां से आएंगे। कम से कम पहले घरों में होती थी, अभी घर ही छोटा हो गया, घर में तुलसी की जगह कहां बच गई। तो there you need to understand that there should be a cross exchange of ideas, dialogue between the Ayurveda people and agriculture. So many areas where we can do medicinal plants farming. फॉर एग्जाम्पल सॉइललेस फार्मिंग, कहीं प्लांट्स ऐसी होती है आज के डेट बाहर ऐसी होती है, उस प्लांटों में जब एनालिसिस करते दे से दैट यार इस प्लांट में आपको लेड का पोर्शन जा रही है, लेड कहां से आ गया भाई, जिस सॉइल में जो ग्रो हुआ वहां से आ गई। अब ये फिर हमारा उसके लिए तो फिर तो बड़े मुश्किल है, कल के डेट में बाहर देशों में एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएंगे। देयर यू आर सपोज टू गो फॉर सॉइललेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, aquaponics फॉर फास्टर ग्रोथ एंड हायर yields. प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड, वर्टिकल फार्मिंग एंड प्लांट फैक्ट्रीज होना जरूरी पड़ेगा, छोटे छोटे प्लांट। उसके लिए हमारे पास हाई लैंड ही नहीं है, लैंड में जाएंगे तो यू नो टेम्परेचर वेरिएशन होती है, कभी बारिश होती है, धूप ज्यादा होती है, उसकी यील्ड सही नहीं आएगी। सो इट इज स्मार्ट फार्मिंग, दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल फार्मिंग होगी। सो देयर वर्टिकल फार्म, वर्टिकल होप यू अंडरस्टैंड। फार्मिंग जो भी होते हैं लैंड में होती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, बट इतना जगह कहाँ है, तो anything there we can go for vertical farming, so we can open up in the plant factories so that there should not be any deficiency of medicinal plants. Tissue culture and micro propagation, particularly in rare and endangered medicinal species, gugulu like crop diversification, intercropping, grafting of medicinal plants. कई 2-3 plants है, हम फॉर एग्जाम्पल गुडुची ज्वर हर है, खोटकी ज्वर हर है, 2-3 ज्वर को हम ग्राफ्टिंग करके द बेस्ट इफेक्ट्स ला सकते हैं हम। सो दिस आर दी एक्चुअली इनोवेशन थॉट्स। वो तभी होगा तब हम एग्रीकल्चर के बारे में कुछ समझें। हम क्यों, जो एग्रीकल्चर वाले उनसे बैठे ओपन माइंडेड से डिस्कस करें, हम ऐसा कर सकते, हम अपनी की जो मांग है, जो डायमेंशन है वो हमें दे, वो भी हम हमसे पूछेंगे, दोनों मिलकर काम करें। अल्टीमेटली इट इज बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नो। So that is very important. There should be a cross exchange of ideas that leads to cross pollination of ideas. So coming to the next slide, please. So as I'm saying, that is competence based dynamic curriculum. That is very important. Ultimately, ये major ultimate goal of this competency based dynamic curriculum is to create Vaidya scientists who understand both systems. That is ancient science and modern sciences. They are the Vaidya scientists. आप सिर्फ एक्सक्लूसिव आयुर्वेद पढ़ेंगे, हो सकते हैं आप सिद्धांत बन सकते, बट यू कैनॉट एक्सचेंज विद अदर पीपल ऑफ अदर साइंसेस। दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम। ये ना सोचे कोई टेक्नोलॉजी कोई टूल होगा ये और किसी का वो किसी का नहीं है, इट इज इन अ टूल, यू हैव ऑल द राइट्स टू यूज दैट टूल प्रोवाइडेड you have the proficiency to use that tool. Next please. इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद NCISM प्रोजेक्ट्स दैट, सो ये एक्टिविटी हो, राइट स्मार्ट गोल्स फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ अंडर द हेडिंग ऑफ विजन फॉर विकसित भारत। अरे विजन जो विकसित भारत का एक संकल्प है, व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स and our expected outcome is build competency in Ashtanga Ayurveda, setting milestone for learning and service. And the smart goals are: S means specific, M means measurable, A means achievable, R means relevant and T is time bound. ये स्मार्ट गोल्स कहीं ना कहीं अब नया बैच आ गया, अभी तो चलो आप लोग अभी एडमिशन लिया, अगले साल यू कैन टेक एन
एक रिसर्च काउंसिल है हमारा, एक उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो जो आप जैसे बच्चों को देती है, स्पार्क प्रोजेक्ट, तो आप उसमें you can involve yourself so that you can contribute to the field of science. So coming to the last slide, last, next, yeah, next, yeah, coming to the last slide, नहीं, previous one, इससे पहले वाला, yeah. So Mahatma Gandhi said, I do not want my house to be walled in on sides and my windows to be stifled. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. What actually it signifies from this context, Gandhi implied that our mind should be open and uninhibited. It should be open to new ideas and new thinking. There should be no artificial boundaries and walls at the borders between different domains of knowledge systems. So that is very important. And next, please. Next slide. Thank you, one and all. That is centuries old Ayurveda is centuries ahead. अब कई सालों से आ रही है, आगे कई साल से है. सो अल्टीमेटली हमारा सोच में क्या बदलाव है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई विश ऑल द बेस्ट यू पीपल सक्सीड इन योर future aspirations. Thank you one and all. Namaskar. Thank you so much, sir, for such an intriguing session. Thank you so much, sir. We are really delighted for your gracious presence. Thank you so much, sir, for telling such a broad perspective on Ayurveda and integrating it with different sciences. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar.